Students, the nutrition on the basis of the food habit, it is divided into two parts. First part is called as autotrophic nutrition, second part is called as heterotrophic nutrition. Auto means self, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन. ओके, सो सेल्फ मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं और ग्रीन ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए खाने के लिए उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट और द अदर्स और ट्रॉप्स मीन्स द न्यूट्रिशन होता है. अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज रीडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, फोटो मीन्स फोटोन, रेडिएशन, सनलाइट. तो जो सनलाइट पर डिपेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, सनलाइट, सूरज के जो फोटोन होते हैं, रेडिएशन, सनलाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द chemical energy. An example, plants are undergoing the process of photosynthesis and preparing their own food. Okay, so this is called as photoautotropic nutrition. Then chemoautotropic nutrition. Chemo means the chemical, and that's why these organisms are called as chemoautotrop. Okay, now this chemosynthesis means they are preparing the chemical energy. So on here light energy is converted into chemical energy, and here chemical energy is converted into the energy. So chemical energies example is there, some of the nitrifying bacteria are there, for example sulfur bacteria and all, and they are undergoing the process of chemosynthesis, and complete reaction is also there. I already given the reaction of the photosynthesis also as well as the chemosynthesis also. So these both the things are the photoautotropic nutrition and chemoautotropic nutrition. These both are the part of the autotrophic nutrition. ये autotrophic nutrition के part है. देन नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉप. हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट ऑन द अदर. खुद का खाना खुद नहीं बनाते. हम कहेंगे कि नहीं, ह्यूमन बीइंग तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हम लोग पकाते हैं, बनाते नहीं है. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पेसीज, प्लांट्स, एनिमल्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पेसीज. सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, second part is called as parasitic nutrition, and third part is called as holozoic nutrition. Now sapro means the rotten and phyte means the plant. The species which are dependent on the rotten plant that are called as the saprophytic nutrition. For example, some kind of mushroom, some kind of yeast, they are the example of the saprophytic nutrition. Okay, then parasitic. Para means the feeding and phyte means the plant. You can see the example. Parasites means they are dependent on the other host body. Parasites are dependent on the host body. For example, these are divided into two parts, ectoparasite and endoparasite. Ecto means which are on the outside of the body. For example, bedbug, head louse and all. And the endoparasite examples are tapeworm, ascaris, and so many are there. Here ectoparasite examples again just like a money plant on the neem tree and all, these are also the example. Vanda plant, cuscuta plant, these are the example of the ectoparasite. Then third one is the holozoic nutrition. Holo means the whole, zoic means the zoon means the animal. So here almost all the 5 types of nutrition, just like a digestion, absorption, assimilation, then excretion and all, excretion and exertion, these all the things are completed by the organisms, and that's why this nutrition called as holozoic nutrition. So in this way 2 important types of nutritions are there, autotrophic nutrition as well as heterotrophic nutrition.